We are just talking about the viscosity. देख लेते हैं. Viscosity, a type of the frictional force suffered by the liquid or gases. Liquid or gases को हम fluid बोल सकते हैं. When the body is inside the fluid or liquid. Okay. तो हमें दिख रहा है कि भी कोई material जैसे fish हो inside the fluid. The part of the boat is inside the fluid. उसी पार्ट पे विस्कस फोर्स लग रहा है जिसपे जो फ्लूइड के अंदर में है, जैसे ये वॉल हो गया, साइड में हो गया, बॉटम हो गया, साइड वॉल्स, इन पे फोर्स लग रहे हो, isn't it? साइड वॉल पे और ये जो बॉटम होंगे इन पे लग रहे होंगे, जो वाटर के इनसाइड में इतने पार्ट पे विस्कस फोर्स लग रहे हैं. Just we talked about the raindrops. Raindrops comes with a very small constant speed. That speed is called terminal speed. Terminal speed is achieved when the force mg is balanced by two opposite forces, Fb and Fv. Fb means force of buoyancy. Fb क्या होता है भाई? Buoyant force. Fb को क्या बोलते हैं? Force of buoyancy. Fb means force of buoyancy. And Fv, of course, the viscous force. It is the viscous force. Okay. जब ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस्ड हो जाएंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगा और एट दैट टाइम एक्सेलरेशन a becomes 0 और जो भी वेलोसिटी अचीव हो जाएगा और that could be the constant. That could be the constant velocity. Okay. लेकिन हम फोर्स ऑफ विस्कोसिटी चाहिए तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ कहता है कि when the body is inside the fluid, the force of viscosity is proportional to the speed of the particle and radius of the body. So it becomes 6 pi eta Rb, where 6 pi is the experimental constant. 6 pi is the experimental constant, dimensionless experimental constant. Eta is the coefficient of viscosity. Depends on the nature of the fluid. R is the radius of the body, V is the speed. We know the unit of eta, Newton second per meter square, and a special unit of eta, coefficient of viscosity, is poise. 1 Newton second per meter square is called 10 poise, or 0.1 Newton second per meter square is 1 poise. हमने यहाँ तक देखा था, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. Okay. Okay. ये हो गया. Now can we talk about the, अब हम इसकी टर्मिनल स्पीड के बारे में हम बात कर सकते हैं. स्टोक्स लॉ को यूज कर सकते हैं टर्मिनल स्पीड को लेकर के. Use of Stokes law in terminal speed. Can we get the terminal speed? Let's try to find the terminal speed now. Okay. So terminal speed of the raindrop. Terminal speed of the raindrop. Okay. हम इसको VT बोल सकते हैं. T for terminal, V for speed. जैसा कि हमने अभी कंसेप्ट क्लियर किया है इसका कि अगर हमारे पास कोई रेन ड्रॉप है तो बस इसमें नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए. और रेन ड्रॉप ऑफ सम रेडियस, सपोज इसका रेडियस गिवन r है. व्हाट इज द वेट? वेट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ दिस. जो इसका वेट है दैट कुड बी, क्या हो सकता है भाई इसका वेट? वेट को हम दो तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं. एक तो डायरेक्टली इसका मास के फॉर्म में लिख सकता हूँ. The weight of the body, W, means mg, means what? Means volume of this, volume of the spherical volume into density of the water. ये तो water ही है, raw water. किस में है भाई? कहाँ पे है? Air में है. These are the airs. Inside the air. The raindrops is falling inside the air. Air is a fluid. It's a fluid.
तो इसकी वेट को हम एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द 4/3 पाई आर क्यू डेंसिटी ऑफ द आर क्यू, पाई आर क्यू डेंसिटी ऑफ द वाटर or into g. It is the weight, but this weight is balanced by two opposite forces. One force is the force of buoyancy, one force is the force of buoyancy, fb. fb means what? Force of buoyancy, buoyant force. Okay, it is the force of, आगे फ्लूइड्स में इसका जिक्र है फिर, buoyancy. What this is the weight of the fluid displaced by the body. हम फोर्स ऑफ buoyancy की बात करते हैं यहाँ पे. अखिल, ये सब क्या है? Don't write this such type of message during the classes. The weight of the fluid displaced by the body means weight of the fluid displaced by the body. क्या है भाई यहाँ पे? Water drop. The weight of the air displaced by the water drop. We can say, इसका दूसरा मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं? Yes, it is the weight of air displaced by the water drop, raindrop, water drop. And what was this weight? कितना weight displace कर रहा है भाई? The weight of the air equal to volume of the water drop, isn't it? ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? It should be the weight of air. It should be weight of air equal to in volume of the water drop, raindrop, water drop. Means the weight of the fluid, weight of the raindrop क्या है? 4/3 pi r q, of course, pi r q s into density of the air into g s. It could be the weight. This is the force of buoyancy. हमने यहाँ पे force of buoyancy को भी समझ लिया. It is the force of buoyancy. Everything inside the air. Fluid. Okay. And there is another type of force. एक और force है भाई. And that force is the viscous force. जो इनके सरफेस से लगेंगे ऐसे सभी जगह मिला करके, सभी एवरी जितने भी सरफेसेस है ना, सभी पे मिला दो, ऐसे से फोर्स लगेंगे. लेकिन सबके लेकर के, सभी को लेकर के हमने एक फोर्स का नाम देते हैं, दैट इज द FV. The viscous force. Viscous force means what? Yes. Suppose at this time viscous force की वैल्यू 0 हो सकता है. When the speed becomes 0, अगर इसका स्पीड नहीं होगा ना, इस पार्टिकल के स्पीड नहीं होंगे, then what is the viscous force? It is 0. But there is a speed. शुरू में जब ये बादलों से निकला था तो उसमें स्पीड 0 था, लेकिन धीमे धीमे इसका स्पीड बढ़ने लगा. जैसे जैसे स्पीड बढ़ने लगा, इस पे फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बढ़ने लगा.
हमें पता है by Stokes law what is the value of the force of viscosity? It is a 6 pi eta RB, depends on the velocity. Velocity will increase, force will increase. Yes. The force of viscosity becomes 6 pi eta RV. 6 pi eta RV. And this V means V terminal velocity. Means at this instant, the net force should be 0. उस समय की बात कर रहा है. When the net force is 0, we will get the terminal speed. So when F net becomes 0, पहले नहीं था 0 शुरू में, पहले तो mg ज्यादा था, इसलिए नीचे की तरफ एक्सलेट हुआ था. एक्सलेट होते होते एक समय आया जब इसने अपना स्पीड अचीव कर लिया. कितना स्पीड अचीव कर लिया इसने, जिसको हमने vt बोलना है अब. एंड उस समय नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी. मींस टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. वी कैन से F upward should equal to F downward in magnitude. In magnitude only. F downward के यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ mg है. F upward के यहाँ पे हमारे पास दो चीज है, FB और FB. In magnitude only. डायरेक्शन में हम इक्वल कर लिए. FV के यहाँ पे हम FB की वैल्यू रखते हैं. Come to the next page now. Is it okay? Come to the next page now. Okay. So FV means 6 pi eta R VT terminal, and FB, force of buoyancy, means 4 by 3 pi RQ, density of air into G, and should equal to weight. Weight means 4 by 3 pi RQ, density of water, or into G. Once again, we are just interested to find the terminal speed VT. So can we get the VT now? Yes, VT can be equal to, yes, we can take something common. यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएंगे. यहाँ पे ये वाला चीज तो पूरा कॉमन ही है, this one and this one. So not too difficult to calculate that. Just take the common, 4 by 3 pi RQ G, and then bracket density of water minus density of air. Obviously higher density minus lower density. जब भी आपको याद करना हो कि किसका डेंसिटी माइनस करना है, तो वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है भाई एयर का. वाटर की डेंसिटी में से एयर की डेंसिटी आपको माइनस करना है. तो not a big task to remember it. And 6 pi eta divided by 6 pi eta. Yes. So we have to divide it 6 pi eta r. Yes. So finally we can get finally we have the terminal speed VT can be equal to S. क्या हो सकता है 6, ऊपर में 4, 18, 4 by 18, 2 by 9. Pi cancel. Yes, of course pi will cancel. 1 r will cancel. 1 r will cancel. 1 pi will cancel. And 2 by 9. Yes. So write it. The 2 by 9. It's a 2 by 9 r square. G will remain. Eta remain here. And density of water minus density of air. Yes. Is it okay? This is the terminal speed. This is the terminal speed. हमने इस terminal speed में दो चीज देख लिया. एक तो हमने application of viscous force देख लिया, और दूसरा we just know about the force of buoyancy. तो डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख दिया. Force of buoyancy means the weight of the fluid displaced by the body.
The principle is given by the Archimedes. Archimedes has given this law. The force of buoyancy is equal to the weight of the fluid displaced by the body, weight of the air displaced by the water drop here. That is the weight of air in volume of raindrop, and that's should equal to 4/3 pi r-cube density of air into g. So simple to get it. Okay. Any doubt? No, sir. Okay. So ये हो गया हमारा force of, this is the terminal speed. तो जब आप इसकी वैल्यू, जब किसी भी रेन ड्रॉप्स की प्रॉपर आर की वैल्यू को हम रख के देखेंगे, प्रॉपर ईटा की वैल्यू जो एयर आता है, फ्लूइड एयर का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सब कुछ रख के देखेंगे, गिवन होंगे किसी प्रॉब्लम में, देन यू विल गेट दैट टर्मिनल स्पीड इज क्वाइट एन स्मॉल वैल्यू, और जो कि मतलब दिस मेक्स द रेन टू बी द ब्यूटीफुल. अदरवाइज ये रेन कितना खतरनाक होता है, मतलब जस्ट इमेजिन करना मुश्किल हो जाता. नहीं, एवरी टाइम रेन, व्हेन वी आर आउटसाइड, वी आर प्लेइंग, वी आर समवेयर, और अचानक से रेन और टर्मिनल स्पीड नहीं, हाई स्पीड बढ़ने लगा. इट्स लाइक अ बुलेट. द होल वर्ल्ड इज इनसाइड द फायरिंग ऑफ द बुलेट, इनसाइड द रेंज ऑफ द फायरिंग ऑफ द बुलेट. बिल्कुल फायरिंग रेंज में आ जाता, सब कुछ खत्म हो जाता है ऐसे नहीं. Okay. So thanks to the viscosity force viscosity हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So everything not the worst, सब चीज का समय आता है हमारे लिए यूजफुल होते हैं. Okay, that's it. This is one of the Stokes law. Stokes law का हमने ये भी देख लिया. Now, तो ये जो हमने viscosity के बारे में देखा है, Stokes law के बारे में जो देखा, ये it was talking about, it was for the spherical body, है ना? In a radius of the body means the Stokes law here for the spherical body. यहाँ पे spherical body के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का यूज है. कोई क्यूबिकल बॉडी हो तो वहां पे आप फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के लिए आप ऐसा ये रूल नहीं लगाओगे, कि वहां पे आपको आर की वैल्यू नहीं आता है. तो वी हैव सम अदर फॉर्म ऑफ द विस्कस फोर्स टू. हम और भी देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विस्कोसिटी, और भी कई तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो लेट्स टॉक अबाउट इट. विस्कोसिटी in another form, in another way. Again, we will talk about the viscosity. Okay, viscosity, yes, viscosity. Okay, what about the viscosity in case of रिवर में देखते हैं. दिस इज द रिवर. हम यहाँ पे एक बेड ऑफ रिवर तैयार करते हैं. बेड ऑफ रिवर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ हाँ सर, आपकी आवाज कट के आ रही है सर. मेरी आवाज कट के आ रही है. Okay, let's talk about the bed of river. So bed of river means रिवर का जो निचला सतह है, वो मैंने वाटर को फॉर्म कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे वाटर के स्पीड को जानना चाहता हूँ कि कहाँ पे वाटर के स्पीड ज्यादा होता है. थोड़ी मैं इसकी ऐसे करके कुछ शो करने की कोशिश कर रहा हूँ स्पीड को, या फिर हम डायग्राम के फॉर्म में भी इसको मैं स्पीड शो कर देता हूँ. एट द बेड यहाँ पे कम स्पीड होगा. इनफैक्ट जहाँ पे बेड होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते. यहाँ पे जो वाटर का जो स्पीड होता है इस पॉइंट पे, बेड ऑफ द रिवर पे, हियर द स्पीड इज 0. यहाँ पे स्पीड 0 होता है भाई. जस्ट एट द बेड ऑफ रिवर द स्पीड इज 0. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, द स्पीड इंक्रीज करता है थोड़ी सी. तो इंक्रीज थोड़ी सी यहाँ पे एरो मार्क है.
थोड़ी सी और बड़ा सा एरो है, थोड़ी और भी ज्यादा, थोड़ी और भी ज्यादा। द स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा? एट द टॉप, एट द टॉप मोस्ट। बिल्कुल जो फ्री सरफेस है ना, वहां पे मैक्सिमम स्पीड होगी। दिस इज द वेरिएबल स्पीड, दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्पीड। हम यहाँ पे शो कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ द डेप्थ ऑफ द रिवर। हम इसको डेप्थ बोलते हैं, दिस द डेप्थ। जेड बोल सकते हैं, जेड एक्सिस, डेप्थ। अगर रिवर की लेंथ और विड्थ को हम एक्स और वाई एक्सिस से जूम कर लेंगे, तो डेप्थ को हम जेड एक्सिस से जूम कर लेंगे। And there is a variation of speed with depth. We are just talking about something, variation of speed. ध्यान से देखें, that is the variation of speed with depth in a flowing river. In a flowing river. Okay. हम यहाँ पे एक टर्म डिसाइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं dv upon dz. dv upon dz means change of velocity with respect to z, with respect to z, and it is especially known as velocity gradient. It is the velocity gradient. Velocity gradient means change of velocity with respect to z. Yes, the change of velocity with respect to z. Depth. Depth. तो एक पर्टिकुलर रेट से एक वेलोसिटी इसका डिक्रीज कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे मैक्सिमम, देयर इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी, देयर इज अ v max, और यहाँ पे v0 means v minimum, the lowest velocity is here. The velocity is decreasing with a constant rate. Velocity एक constant rate से decrease कर रहा है, and that rate is called velocity gradient. Rate means not with respect to the time, with depth. Depth rate है, change of velocity with respect to depth. It is especially known as velocity gradient. Velocity gradient. Yes. For example, just see, मैं यहाँ पे एक boat लेता हूँ, just form a boat here. Here a boat. Okay, some part of the boat inside the water. Some part of the boat is inside the water, and some part is outside. Obviously, ऐसा ही होता है boat के साथ. It's a boat. Yes. जो part inside the water है, in fact, उन्हीं part पे viscosity की बात करते हैं. एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक बेस भी है, इस बोट का एक पर्टिकुलर बेस भी है ना? एक पर्टिकुलर बेस भी है यहाँ पे बोट का। हमें दिख रहा है बेस, दिस इज द बेस, ऐसे इट्स अ बेस। इन सब पे फोर्स लगने वाले हैं भाई, इन सब पे विस्कस। इफ द वेलोसिटी इज दिस वे, मैं इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन देख लूं, अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इट इज नॉट द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है v, तो दिस पार्ट एंड ऑल द साइड पार्ट is in contact with the water and all will apply the viscous force this way. ऐसे लगाएंगे, fv की वैल्यू ऐसे आएगा,
opposite to the velocity. तो कितना होगा, कितने फोर्स ऑफ विस्कोसिटी आएंगे, इस बात को हमें देखना है. So here law is that the force of viscosity Fv is of course the proportional to the rate of change of speed of the water flow with respect to the depth dv upon dz. ये velocity gradient पे changes करता है. Higher the velocity gradient, rate ज्यादा होगा तो force of viscosity भी ज्यादा होगा. And it is also proportional to the area. Area mean area of contact. Area of the contact with the fluid. A means what? Area of contact. अगर एक पर्टिकुलर जगह पे हमने dv अपॉन dz की वैल्यू देख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे इस एरिया में यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कितने फोर्स ऑफ विस्कोस, हर जगह पे अलग अलग विस्कोस फोर्स लगने वाले हैं. हर जगह पे एरिया अलग है. इस पॉइंट पे क्या लगेगा भाई, बॉटम पे, तो बॉटम एरिया इंटू dv अपॉन dz. इस पॉइंट पे ये जो ऐसा सरफेस होगा ना, ऐसे कुछ कर्व वाले सरफेस होंगे इसका, आउटसाइड का वॉल का, इस पे भी एक अलग से विस्कोसिटी फोर्स लगने वाले हैं. कितने लगेंगे, तो dv अपॉन dz और इनटू दिस वन इनटू दिस एरिया. ये जो एरिया यहाँ पे आने वाला है, इधर से भी और इधर से भी जो एरिया फॉर्म होने वाला है ना, वैसे. Got it? So we can say area in contact. Area in contact. Okay, with the fluid. With the fluid. And what could be its, it is equal to, it's equal to the eta A dv upon dz, and opposite to the flow of the body, where eta is of course पहले ऐसा ही. What is this eta? The same. Eta is the coefficient of viscosity. What this eta? Here the eta is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. तो ऐसे, this is also the viscous force. Fv is also the viscous force. Got it? Is it okay? Yes, sir. Okay. तो हम ऐसे भी इसको दिखाएं. अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिल जाता है. ओके, अब हम इसका एक विस्कस फोर्स का एक और भी यूज करना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का. वी हैव टू लुक फॉर द flow of the liquid through a narrow tube. Flow of liquid through a narrow tube. Let's talk about the flow of liquid through a narrow tube. Flow of liquid or fluid. Fluid. Flow of fluid through a narrow tube. Of radius smaller. चलो ये ले लेते हैं.
हम एक स्मॉल और रेडियस वाले एक नैरो ट्यूब ले लेते हैं। फिर मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ। नैरो ट्यूब बिल्कुल, और साथ में नैरो ट्यूब के बारे में आपको एक कुछ और भी बताऊं कि नैरो ट्यूब में अगर फ्लो होते हैं तो at which place the maximum speed of the flow should be। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, दिस द बेड ऑफ द रिवर। बेड ऑफ द रिवर का मतलब होता है कि द लेयर ऑफ द वाटर, लेयर ऑफ द फ्लूइड विद द वॉल। तो देयर इज ओनली वॉल, सरफेस यहीं पे, सरफेस से जो कांटेक्ट में रहेगा ना, द सरफेस इज कॉल्ड बेड ऑफ द रिवर। और सर जहां पे सरफेस है वहां पे वेलोसिटी इज मिनिमम और जीरो। तो इन द सेम वे जो पाइप होता है ना, पाइप, तो चारों तरफ ऑल दीज आर द वॉल्स, सभी सरफेस है, यहाँ पे स्पीड मिनिमम होते हैं। कहाँ पे भाई? ऑन द वॉल्स। इसलिए अगर कोई डस्टी, कुछ डर्टी वाटर होते हैं, कुछ डस्टी वाटर होते हैं, तो उनका डस्ट इनकी सरफेस से चिपक जाता है और फिर नहीं निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्यों निकलेंगे भाई? इनका स्पीड तो जीरो है। यहाँ पे आकर के पेस्ट हो गया। अब इसको निकालने के लिए अब लोग चलो इसको साफ करते, वाटर फ्लो से इसको साफ कर देते, बट नहीं, इट विल नॉट। व्हाई? द फ्लो इज जीरो हियर। ये यहाँ पे चिपके रह जाते हैं। यहाँ पे जो गंदगी होती है वो चिपक के रह जाते हैं यहाँ पे। तो एट विच प्लेस द मैक्सिमम स्पीड देगा? कहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए भाई? बिल्कुल एट द सेंटर मैक्सिमम स्पीड। आप देखोगे मैक्सिमम स्पीड सेंटर पे होंगे। यहाँ पे देयर शुड बी द मैक्सिमम स्पीड। धीमे धीमे इसके स्पीड कम होते जाएंगे, ऐसे और भी कम। यहाँ भी बिल्कुल सिमेट्रिकल।